Good morning, students. How are you all? Today we are going to start again the English grammar with new topic. है ना? Yesterday or in last classes we have done tenses as well as if condition sentence. Okay, the practice I have sent to you, and I hope that you have done the practice. Now today we are going to start active passive. So before starting, first we should know that what is active and passive. And before that, raise your hand if my voice is clear. If my voice is clear, then raise your hands, everyone. Okay. Okay. So voice is clear and board is also clear, I think. So today we are going to start active passive. So what is active and what is passive? Suppose sometimes what happens, we see some people, they do some work, they cannot sit idle. So it means we say that he is very much active. And some person we see that they sit like just that, they do not do anything. So we call them passive. तो एक्टिव और पैसिव यही होता है, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, वो एक्टिव कहलाता है, और जो काम नहीं कर रहा वो पैसिव कहलाता है. इन माय क्लास आई टॉट यू डूअर. डूअर का मतलब हो गया पर्सन हु वर्क्स. पर्सन जो काम करता है वो डूअर कहलाता है ना. डूअर का मतलब यहाँ सब्जेक्ट. अब वो सब्जेक्ट के तौर पर भी काम में लिया जाएगा. वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन. These are the initial things we are to understand before we go to on active passive. And object. What is object? Object is important in passive language. If we talk about, if we want to convert a sentence active to the passive, then we need object. And how we will find the object? यदि हमने object को sentence में सही तरीके से ढूंढ लिया, we recognize the object, then there will not be any problem to make the sentence, convert the sentence active to passive. What is object? Person or thing which comes after verb. Person or thing which comes after verb is called object. ठीक है, ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा. What is doer? Doer is subject. Subject equals to doer. Doer equals to subject. Verb we know, action जिसे हम कह रहे हैं वो verb है. और what is object? Object is too much important. Object means person or thing which comes after verb. Verb के बाद में आया व्यक्ति और वस्तु क्या कहलाती है? Object कहलाती है. These three things you have to take care. If you want to write, then you can write. Then we will go ahead. Now I will teach you how to convert active sentence into passive. Active sentence, what sentences we have studied till now, these all were active sentence. Active sentence starts with, what is active sentence? Active sentence starts with subject. Active sentence always starts with subject. Or passive sentence starts with object. एक्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और पैसिव सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. दिस यू हैव टू टेक केयर. Okay students, now we will start. So students who has attended my 10th classes, then they will understand this topic very easily because I am going as like 10th. जिस प्रकार हमने 10th किए उसी प्रकार हम बाकी सारे के सारे एक्टिव पैसिव करने जा रहे हैं. बिकॉज पैसिव depends on active. And what is active? The sentences of tense we have done, these were active. Right? Okay. Have you written this? I'm going to rub this. Okay. Very nice. Now, what you have to keep in your mind that if any sentence is active, it means with that sentence is starting with subject. Okay. Or passive sentence always starts with object. Now we will go as like tenses. So it is present simple. Student who entered late in the class, they do not take it
misunderstood that it is active passive sentence or it is tense class. It is the class of active passive, but we are going through the present simple. How to make the पैसिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल का कोई एक्टिव सेंटेंस है उसको पैसिव कैसे बनाया जाए दैट वी विल लर्न ओके एक्टिव द फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू इन आल्सो दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव का फॉर्मूला हमेशा ये चल रहा था व्हेन आई टॉट द टेंसेस दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव सेंटेंस मीन्स जितने भी सेंटेंस हमने अब तक किए नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पैसिव सेंटेंस अब हम पैसिव सेंटेंस के फॉर्मूले की बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल so how we will change the sentence of present simple into passive the formula like this I will give the separate formula of every tense like present simple you will get the separate formula present continuous you will get the separate formula present perfect you will get the separate formula got it everyone okay first I'm writing this format or formula of present simple object if we want to convert an active sentence into passive that time first we are to write object then object plus is r और m according to object object के अनुसार फिर is आएगा r आएगा और m आएगा if object is I then m will be there objects are you we they then r will be there and in object if we find he she it name then is will be there plus third form of verb first we will find object we will put object then is r m according to object after that third form of verb की कौन सी फॉर्म आएगी third form plus by plus subject this is the formula of present simple to convert active sentence into passive because we are doing the topic active and passive now I am giving one example my example is my mother makes tea my mother is subject the doer is there subject is there my mother makes tea this is subject this is verb or after verb object is there okay this is active sentence ये active sentence है that's why I have written a now we will change it into passive अब इसको passive में change करेंगे तो what is the formula of passive first we will find out object so this is object how we recognize that after verb any person or thing is object so object is this so we will take it here object now after object what will come according to object is r m इनमें से कुछ एक आएगा so is will be there so t is not first person second person so it is will come t is after that third form of verb or verb is this make then made third form of make will be made he is made then according to formula by subject then this subject mother my mother this is passive this you have to keep in your mind my mother makes tea the passive will be tea is made by my mother got it everyone you have 2 minutes to write down then after this we will go for the 6 or 7 sentences like we have done in tenses also simple positive negative and interrogative negative like this we will go by the all sentences so you will understood the whole structure of present simple have you written everyone I hope that you have written very nice very good till yet any problem is there
If you have any problem, then raise your hand, everyone. Okay, no problem. It means you are getting very good. Now I'm going to rub this and I will make the 6 or 7 sentences which are essential of the same tense. इसी tense के मैं आपको 6 or 7 sentences बता रहा हूँ. This is the most important thing. If you remember this one, then there will not be any mistake. यदि आप ये इतना याद रखते हैं, this formula and this is my mother makes tea, tea is made by my mother, then there will not be any problem. कोई भी problem नहीं होगी. Is there any problem? Yes, sir. Who is there? Is there any problem? Who is Hello, there? sir. हाँ Hello, बेटा, sir. बोलो. Good बोलो morning, बेटा. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर ये जो आप करवा रहे हो इसी सर फेयर कॉपी में नोट करना है. हाँ, definitely करना है. ओके सर. ओके बेटा. Okay. Now I'm going to write down the 6 or 7 sentences which are most important, है ना, of present simple. इसी present simple के इसी फॉर्मूले के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ. But before that, how we will change subject and object, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. Okay. If subject, object, if I is there, then in object it will be me. If me is there in object, then if we take it, make it subject, then it will become I. How? Suppose one example is there. He helps me. अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया. गॉट इट. अब इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो इसको आगे लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये मी क्या बन जाएगा? आई. दिस मी विल बिकम आई. आई के साथ एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई एम हेल्प्ड बाय, ये ही बन जाएगा हिम. लाइक दिस वी विल चेंज. हाउ टू कन्वर्ट सब्जेक्ट. यदि सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में जाते समय मी बन जाएगा. यदि ऑब्जेक्ट में मी है तो उसे सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई बन जाएगा. लाइक दिस यू आर टू कीप इन योर माइंड द चेंजेस. जो चेंजेस है वो आपको अपने दिमाग में रखते हैं. यू विल रिमेन यू, आई विल बिकम मी, देन यू विल रिमेन यू, we will become us, they, them, they बन जाएगा them, he, him, she, her. Like this, these changes will be here. यदि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएंगे. आई मी बन जाएगा तो मी भी वापस इधर आएगा तो आई बन जाएगा. Got it, everyone? Write down this also because these are very much important. हेलो. हाँ दुष्यंत बेटा. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरे पास इन सारों के नोट्स पड़े हैं, तो मैं करूं क्या राइट? बेटा फेयर कॉपी में तो करने ही पड़ेंगे ना, है ना. आपकी हैंडराइटिंग में फेयर कॉपी में तो होने चाहिए ना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा, सेंटेंस भी हो जाएंगे. गॉट इट, है ना. अभी नहीं लिख रहे तो फेयर में बाद में कर लेना बोले, अभी समझ लो वीडियो से. गॉट इट. ओके. एवरीवन हैज रिटन. Good. Now I'm going to write 6 or 7 sentences which are most important. Okay. The first sentence, positive sentence. What we took in tenses हमने लिया था I eat food.
I eat food. Positive sentence, है ना? यही हमने tenses में लिया था. The same sentence I am repeating here. Okay. Now what is this? Is verb. After verb, this is object. So object we will take ahead. Object food. Got it? With food is will be there according to formula. Food is then third form of eat, eaten. Food is eaten then by, and I will become me. This is active or this is passive. Got it, everyone? The simple sentence, I eat food, then it will become food is eaten by me. Good. First sentence, now second. It is positive, now negative. I do not eat food. Active sentence. Now we will make it passive, then verb, object. Object will come ahead. Food is, then negative as a not. ठीक है, ये पॉजिटिव था इसलिए नॉट नहीं है, इसमें क्वेश्चन में नेगेटिव है तो फिर नॉट यहाँ आ जाएगा. फूड इज नॉट इटन बाय मी. पैसिव. Get it, everyone? This is positive, negative. Now interrogative. Interrogative. Third sentence, interrogative. Do I eat food? Got it? Do I eat food? Now, what is this? This is verb, subject, object, है ना? And this is tense indicated word, है ना? Tense indicated plus interrogative word. ये भी interrogative word कहलाता है ना? So, what will be there? First, we will take food. Food. Now, what will be there? According after food, we were putting is. ठीक है? Is जो is अंदर आ रहा था इसमें बाहर आ जाएगा because we are to make the interrogative. To make the interrogative sentence, we will put the helping verb. These are called helping verb. Is are है ना? The helping verb will come out. In the question also it is outside. That's why the helping verb will come in answer also outside. Is food then third form. Is food eaten by me? Got it, everyone? Do I eat food? The interrogative sentence. The answer will be is food eaten by me. This is active and passive. Interrogative sign will be there in both sentences. दोनों सेंटेंस में interrogative sign रहेगा. Got it, everyone? So 3 type of sentences. 1 minute I am giving you. Write down, then we will go ahead. Okay, students, I think you have written. If you have written, then I will make some other sentence. Okay. Ronak, yes, Ronak. Yes, beta. सर बोलो बेटा बोलो. सर यहाँ पे डू आई ईट फूड कैसे आया सर? डू कैसे आएगा इधर सर? बेटा प्रेजेंट सिंपल पढ़ा तो आपने टेंस पढ़े थे. प्रेजेंट सिंपल सर पढ़े थे. प्रेजेंट सिंपल में क्या आता था? डू. ये पढ़े नहीं पढ़े? आ रहा था ना बेटा. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू आएगा उसमें. गॉट इट? यस सर. That's why I told in my starting that if you have studied tense carefully, then you will understand this. Got it, beta? यस सर. Okay, beta. Okay. Now fourth sentence. Fourth sentence अब हम कर रहे हैं. Fourth sentence will be of fourth sentence. Do
I not eat food? Active. Active sentence क्या होगा? For do I not eat food? Then what will be passive? If sentence is interrogative, then helping verb will come ahead. Helping verb सबसे पहले आ जाएगा. After that, object. Is food not eaten by me? Got it, everyone? This is fourth sentence. Do I not eat food? The answer will be, or we say, if we convert into passive, then is. Interrogative sentence is there. In interrogative sentence, in question, the helping verb is outside. That's why helping verb will remain outside. Is food not eaten by me? Is passive sentence. ये हो गया fourth type का sentence. Now we are going to make fifth type of sentence, which will be जो कैसा होगा? WH वाला. We have done in tenses. WH. Why do I eat food? Active sentence. Why do I eat food? Okay. This is there. WH word is there. Then helping verb is there. Then subject is there. Then verb. Then object. So what we are to do? These two things are outside. Then we will keep them outside. Outside means before subject or object. So why will remain? Why रहेगा? And do will convert into is. Why? Because हम food लाने वाले हैं आगे. Food will be there. Object. What is object? So helping verb will come according to object. So what is object? Object is food. Then is will be there. है ना? यहाँ कुछ और object होता, I होता तो M आ जाता, U होता तो R आ जाता. This you have to keep in your mind because जो formula मैंने पहले बताया उसके अनुसार ही चलेगा. Now why is food? ठीक है. Now third form of verb. Eaten. Why is food eaten? Then by me. Interrogative. This is passive. ये हो गया fifth type of sentence. Why do I eat food? Then answer is why is food eaten by me? Very good. Now sixth type of sentence. According to tense, we have done like that. Why do I not eat food? Active sentence. Next, interrogative. WH interrogative plus negative sentence है. इसका passive. How we will make? The same is there. Why? WH word will there. Is. Then object. Why is food? After that not आ गया तो not पहले आ जाएगा. Why is food not? Then third form of verb. Why is food not eaten by me? ये interrogative और ये हो गया passive. Now look at the board. Fourth, fifth or sixth sentence. Sixth sentence is too much important because each and everything is including in it. WH word, helping verb, object, negative. यानी WH और negative वाले sentence में हर चीज आ गई है. अब आपको इनका जो स्थान जिसका जहां है वही रखना है तो कोई गलती नहीं होगी. Let it be. अब देखिए ग्रामर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे. Let it be gap filling, let it be एडिटिंग और रीअरेंज. इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना है. इन्हीं ग्रामर से मिक्स होकर आपकी ग्रामर आएगी. बट इट व्हाई डू आई नॉट ईट फूड? व्हाट विल बी देयर? व्हाई इज फूड नॉट ईटन बाय मी? बट इट द सिक्स्थ सेंटेंस. एंड अगेन आई एम गिविंग 1 minute टू राइट डाउन दिस सेंटेंस. हेलो. यस. हाँ बेटा बोलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. तो मुझे जो सिक्स सेंटेंस है वो समझ नहीं आया. फिफ्थ वन.
Fifth sentence. Yes, sir. Okay, Fifth. now full. Okay, now listen. Fifth sentence is WH word sentence है ना, WH interrogative. WH means जो ऐसे sentence हो गए WH word से start होते हैं, why, where, when, which, how, ये सब WH sentence word interrogative sentence कहलाते हैं ना. ये WH आ गया, फिर do आ गया. Do क्यों आया? क्योंकि ये tense कौन से tense का है? Present simple का. तो why do I eat food? यदि ऐसा sentence होता है तो उसका passive how we will make why is. why तो why रहेगा. ये do की जगह is क्यों आया? क्योंकि ये हम सिंपल सेंटेंस यदि बनाते तो ये फूड के बाद में इज आता. तो यदि ये इंटरोगेटिव है इसलिए इज हमने यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख दिया. ओके, क्योंकि इसमें भी बाहर आया इसलिए ये बाहर आ जाएगा. व्हाई इज फूड इटन बाय मी. गॉट इट आशीष? गुड. I think everyone has written this. Now I'm going to tell you the next और very much important seventh sentence. अब इसी सीरीज में एक seventh sentence मैं आपको बताने वाला हूँ. That is also very much important. Okay. Who eats food? देखिए, this sentence is there. If any sentence starts with who, यहाँ आपको गौर करना है. You have to listen carefully. If any WH sentence starts with who से start होता है, then the answer यानी passive sentence, ये active sentence है. Passive sentence will be started with by whom. This is most important thing. That's why I am telling you separately. इसीलिए एक sentence आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अक्सर confusion हो जाता है. Rest all WH question words, चाहे वो why, where, when, which, how many, whatever is there, that will remain same. वो same रहेगा. But who is there, who will be there, then it will become by whom. उसके बाद फॉर्मूला वैसा ही चलेगा जैसा हमने पहले देखा. ठीक है, तो ईट्स आ गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ईट्स है तो पक्का इसमें कहीं ना कहीं डू रहा होगा. डू रहा है तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आगे हम फूड लेने वाले हैं. बाय होम इज फूड इटन. हेलो, ये यहाँ कंप्लीट हो गया है. दिस इज पैसिव और इंटरोगेटिव. हाँ, हु इज देयर? दिव्यांशु, बोलो बेटा. यस सर. बोल सर बेटा. आपने बताया कि जैसे व्हेन व्हाट में नहीं चेंज होता है ऐसे. तो सर हूम में क्यों चेंज होता है? बाय हूम क्यों लगते हैं? हाँ 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 हाँ. इसमें देखो, जो बाय हम पीछे ले जा रहे थे ना, वो इधर आगे ले आए. ठीक है, और ग्रामर के रूल कहते हैं कि ये हु का बाय हुम बनेगा, क्योंकि हिंदी इसकी क्या आ रही है, ये हिंदी के हिसाब से चलता है, किसके द्वारा किया गया. दैट्स व्हाई इट बिकम हुम. बाकी सब सेम रहेंगे क्योंकि उनमें उनका अर्थ नहीं बदल रहा. बट इट जो हिंदी का सेंटेंस है वो इसमें चेंज हो रहा है हिंदी का, और उनमें बाकियों के किसी के अर्थ नहीं बदल रहे, इसीलिए हो गया. इसमें क्या है, कौन फूड कौन खाता है, इसका हिंदी देखो इसके ना, हु ईट्स फूड, फूड कौन खाता है, इसमें क्या हो जाएगा, किसके द्वारा. तो ये बदल गया. दैट्स व्हाई it is changed. Got it? So everyone listen carefully. Now you have to write down all the sentences. I think you have written this. So we had started the active passive with present simple. Present simple के साथ हमने active passive को start किए, और most important sentence जो 7 थे वो मैंने आपको change करके बता दिए. इसके अलावा if you have any grammar book, if you have some practice, then do the practice. Otherwise, after completing this topic, I will send you the practice. That is another matter. If you want to do practice right now, then you can do with your grammar book. है ना, कोई भी grammar book के साथ present simple के बना ले. Because today I have taught only present Hello, simple. sir. हाँ बेटा बोलो. सर आपने ना ये ना 7th का जो सेकंड सेंटेंस था ना, बाय होम. हाँ सर ये बाय होम में ना थोड़ा जैसे ना बाय होम कोई भी WH वर्ड होगा तो उसका बाय होम ही होगा क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ हु होगा ना. बोर्ड पे देखो बेटा, सिर्फ हु है, हु का ही बाय होम बनेगा. बाकी कोई WH वाई है तो वो वाई ही रहेगा. ठीक है, व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा. सिर्फ ये हु बन जाएगा हुम, बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे. गॉट इट? ओके सर, थैंक यू. ओके, वेरी गुड बेटा.
Okay, now you are to do practice. If you have any grammar book, then you are to do practice with this, and rest we will go ahead. अब देखिए, कल आप क्लास में आए उससे पहले प्रेजेंट सिंपल मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको पढ़ के आए। टेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको भी आप पढ़ कर आए, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। यस सर, एनी क्वेरी इज देयर? नो, नो क्वेरी इज देयर? एनी डाउट इज देयर? इफ एनीबडी हैज डाउट, देन रेज योर हैंड. No? Okay, okay students, so today we will end this class here only, because we have only, okay, one query is there. Okay, okay. Yes, Yojana beta. यस सर, गुड मॉर्निंग। Good morning beta, बोलो। सर इसमें जो 7th है, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हु इज फूड इटन बाय? नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा? अच्छा हाँ, गलत हो जाएगा, ठीक, है ना? ओके बेटा। थैंक। Okay students, all the best. Okay, one query is also there. Okay, good good good, very good. सर ने सर बताया ना सर, this is some English term by food is eaten. बेटा आवाज साफ नहीं आ रही। सर आपने सर लिखवाया ना सर, who eats food का by whom is food eaten, हाँ, उसकी जगह सर by whom food is eaten, food के बाद इस लग सकता है या पहले लगाना जरूरी है? नहीं, जो मैंने जहां लिखा है वो वही रहेगा। ये फूड से पहले, बिकॉज ये इंटरोगेटिव है ना बेटा, इंटरोगेटिव मार्क है, वो उससे पहले ही आएगा। और जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, उससे पहले ही रहेगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता आपको ये इज यहाँ आ जाता। गॉट इट? ओके सर, थैंक ओके यू। बेटा, ओके ओके। इज देयर एनी क्वेरी? नो? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट